Yeah, good morning, friends, and welcome to the session. We are live. So just let's miss. Hi, Harpreet. Good morning, Vijay. Yeah, Yeju 26. Good morning. Yeah, Vikrant Patil here. Okay, Vikrant. Good morning. So I guess let's wait for at least 10 seconds. I'm getting messages. Traders are joining. So I'll also play the same on my mobile. My second screen is not working today. I don't know why. Yeah, now everything is fine. Let's start. So yeah, 2512 Ashok, IB Mathematics. Now I know you. Ashok, can you introduce yourself? I'm seeing it for the first time. Yeah. So let's start. Let me share my screen. Today is going to be a good day as far as the opening is concerned. So I'm sharing my screen. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So on 3rd of August, let's see how we are placed, where the globe is, what the volatility is showing, and what's the stocks you should look at. And please go through the weekly Substack note. So let's start. So I'll start as always. We start with a broad headline. Trump says Iran negotiations to begin on Monday, Hormuz deal imminent. So again, something good is happening on the crude side. It will decline. That's good for the market. It will rise. Whenever such positive thing comes on the geopolitical stuff, we have seen कि निफ्टी में एक उछाल आता है. Today is one such day. एंड ग्लोबली एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रीन. यूएस फ्यूचर्स देखे तो करीब करीब पौने 300 पॉइंट ऊपर है. फ्राइडे को डाउ जोन्स भी अच्छा बंद हुआ है, नैस्डैक भी अच्छा बंद हुआ. तो समवेयर डाउन द लाइन ग्लोबल माहौल में एक अच्छा सुधारा देखने को मिला है, विच विल रिफ्लेक्ट इन आवर मार्केट्स. Okay, Ashok. So everything looks green, including the European part. Let me check Asia. Nikkei is positive. Brazil is positive. Hang Seng is flat. Does not matter that much. So मॉर्निंग में अगर हम ग्लोबली एक झलक दिखाते हैं तो सब जगह से हमें एक ग्रीन देखने को मिलता है, विच इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स. या गुड मॉर्निंग नानावती जी, आई गेस यू आर बैक. सो आफ्टर दिस वी गो टू द प्राइस चार्ट्स. सबसे पहले क्रूड देखते हैं. देखिए क्रूड में एक थ्री ब्लैक क्रॉस बना है. थ्री ब्लैक क्रॉस का मतलब है कि क्रूड में एक हाई बन गया फिर से. So I'm not expecting any up move in crude. So let me show you what I mean by that. ये काफी reliable candle patterns है, which is when market fell 1 2 3. इसको three black cross बोलते हैं. And at our three black cross, this resistance was tested and market did not break it. Fine. So crude में एक high बन गया. I think crude should settle down somewhere around 68. And if it breaks this, we should see crude again back to $54. So crude में एक the trend has also changed to down, which is a sequence of lower highs and lower lows. So as far as crude is concerned, it's absolutely in a declining mode. देखिए volatility spikes आती रहेगी. After that, let's go to India VIX, and post that will come to our markets. So India VIX, if you see, is now strength नहीं है यहाँ पे. See, India VIX did not cross this high. If it did not cross this high, it should once again come and settle down somewhere here. So, which is around $9-10. So India VIX, the volatility is decreasing, and India VIX is also, if you see, moving in a channel, which is a falling channel. And a falling channel always says till breakouts are not there, prices should come and test the lower end of the channel. See how many times, कितनी बार India VIX ने upper end of the channel test किया. 1, 2. This is the third time. Not breaking the channel means volatility will come down, which is good for the markets. And on the downside, this was the construction part.
it was 1 2. So which says that India which be more or less it's moving on a trajectory जो है उसकी एक declining mode है. अगर इंडिया विक्स की ट्रेजेक्टरी फ्रेंड्स डिक्लाइनिंग मोड है तो मार्केट में उछाल आता. दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. एवरीबॉडी एग्री? गिव मी आइदर अ यस और अ नो. I'll wait for your yes or a no. नाउ एक चीज क्लियर है, जब तक इंडिया विक्स ये चैनल हाई नहीं तोड़ रहा है, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम the low volatility regime is here to stay, which is positive for the markets. I repeat, low volatility regime is here to stay, which is positive for the markets. इतना देखने के बाद अगर मैं अभी गिफ्ट निफ्टी पे जाऊं तो आई थिंक मिनिमम इट शुड बी प्लस 100 प्लस पॉइंट्स. प्लस लेट्स गो एंड चेक. या so gift nifty is plus 1670 points and it has gone above this high. So something is sometimes things are good. अगर swing trader के लिए कुछ भी अच्छा है ना तो डे ट्रेडर के लिए एक स्ट्रेस मोड रहता है. IB mathematics, there is a divergence on daily charts on VIX. We'll come to that macro in the evening session. IB mathematics I will do in detail. Let's focus on today's trading. So market are likely to gap up. Market में gap up तो है, no doubt about it. और देखिए यहाँ पे जो मार्केट का गैप अप है बहुत दिन के बाद, देयर आर टू एवरेजेस. अभी हम एक्सपोनेंशियल अगर देखते हैं 200 डीए में तो मार्केट वहीं पे बंद हुआ है. So I have given that in detail in the Substack note. I have put it in the chat window also. So please go through it, refer it, read it. It sets your undertone for the weeks. So I take detailing I have done. या आरिफ वॉकिंग द बैंड बोल सकते हैं, एक ओवरबॉट स्ट्रेच है मार्केट में. सो देखिए बहुत बार मार्केट ने ट्राई किया 200 डे एक्सपोनेंशियल पे. फ्राइडे का क्लोजिंग वहां पे आया और अगर माहौल कुछ भी खराब नहीं है तो इट जनरली इट रैलीज अबव द 200 डे मूविंग एवरेज. सो लेट्स ड्रॉप टू लाइन. फर्स्ट इज हियर विच इज 24,500. Which is somewhere from previous day's close. The prices are 168 points up. तो यहाँ तक का आज एक हिट आना चाहिए. इफ इट कम स्ट्रेट एट द ओपन तो डे ट्रेडर के लिए ये एक अच्छी न्यूज नहीं रहेगी, बिकॉज डे ट्रेडर को चाहिए क्या, मार्केट थोड़ा सॉफ्ट खुले and then it picks up the momentum either up or down during the day. So drop a line over here and drop two lines. One at is this high and other is this high. Right. Now average purpose is done. I'll remove it. Now I go to my intraday charts. So अगर intraday charts पे अगर हम जाते हैं तो जहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ किए, देखिए मैं ये पार्ट पे जूम कर रहा हूँ. नाउ रिमेंबर टू गो राइट लुक लेफ्ट. So can you see there is a gap over here which has not been filled. So this entire gap है आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है और you can say it's a guiding target भी बन सकता है. So this comes to somewhere here. Everybody clear from how we got this supply? 200 DA में काफी ऊपर है, पहले EMA क्रॉस करता है आरिफ, उसके बाद एक 200 डे सिंपल मूविंग पे जाता है. एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज फर्स्ट बिफोर द सिंपल मूविंग एवरेज. सो दिस इज हाउ द मार्केट्स आर. तो ये जो है दिस इज व्हाट वी कॉल this 200 exponential moving average. अगर मार्केट आज गैप अप खुलता है, ओके, दिस हाई पे भी एक सप्लाई है, उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ. ये सब स्विंग हाइज है डेली प्राइस चार्ट्स पे. तो मार्केट में कहीं ना कहीं राइट फ्रॉम करंट लेवल्स ऑल द वे अप हियर टू 24,600 तक है. आज के लिए मैं बोलूंगा 25,000 पे एक अच्छा पड़ाव रेजिस्टेंस आ रहा मार्केट को. देखते हैं गैप अप वहां जाके मार्केट कैसे बिहेव करता है. एंड दिस इज द 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज. देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना तो देन द गैप अप इटसेल्फ बिकम्स योर सपोर्ट. देखते हैं इंट्राडे कैसा बाउंस पुल बैक आता है, व्हाट वी कॉल फेडिंग इन द गैप. सो अभी मैं 15 मिनट्स पे जाता हूँ. द अपर लेवल्स विल नॉट बी चेंज्ड.
तो लोअर लेवल्स देखिए, ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये 200 एक्सपोनेंशियल है, तो आप इसको ये बेस को एक सपोर्ट ले लो, डिमांड ले लो. सो दिस इज हाउ निफ्टी इज लुकिंग लाइक टुडे ऑन अ 15 मिनट्स. एंड हमने उस दिन भी देखा था कि जब तक चैनल नहीं टूट रहा है तब तक वी कांट बी, वी हैव टू बी पॉजिटिव, एंड दिस इज द चैनल. There it goes, that's the market. Do you all remember this channel which we are following? देखिए आरिफ, एक ब्लो ऑफ स्टेज है आरिफ, तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ब्लो ऑफ में. माइक्रो डेटा अगर आप देखो तो माइक्रो डेटा गेट्स दिस थिंग अलोंग विद द डायरेक्शन. देखिए डेटा डायरेक्शन के साथ चेंज हो सकता है आरिफ, बट आई अग्री विथ यू. पुट राइटिंग अभी भी हाई है आरिफ, तो कल का एक्सपायरी हो जाने दो आरिफ, देन विल टेक अ रिलुक, और इवनिंग में एक बार डिटेल में पीसीआर देखेंगे आरिफ. हियर लेट्स डिस्कस द लेवल्स, एंड दिस इज द प्रीवियस डेज हाइज ऑलवेज ब्रेकआउट इन अप चैनल विच इज 24,429, और उसके ऊपर गैप अप करता है तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट बन जाएगा. So this is how the markets are looking like today as far as Nifty is concerned. Everybody agree? Don't try to fight the trend. देखिए फाइट मत करिए, चैनल में जब तक है तब तक आप पॉजिटिव रहो. गॉट इट आरिफ? या तो एक्सट्रीम पे जाने दो, एक्सट्रीम मतलब एकदम ऊपर. इन बिटवीन इफ यू ट्राई टू फाइट अननेसली हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे आपके. आपको अगर लग रहा आपका व्यू करंट मार्केट मूव से अलग है, इट्स फाइन, एक आध दिन हो सकता है. डोंट टेक अ ट्रेड, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट हैपेंस टू मी आल्सो. जो मैं सोच रहा हूँ और जो मार्केट हो रहा वो मेरे समझ के बाहर है, तो मैं एक दिन चुपचाप बैठ जाता हूँ आरिफ. इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट द पीसीआर स्टफ लाइक दैट आरिफ, एक दिन रिलैक्स करो आरिफ और ट्रेड वेरी लाइट. डज इट मेक सेंस आरिफ? गिव मी अ यस इफ यू एग्री आरिफ. बहुत बार ऐसा होता है, हर एक मूव हमें समझ में नहीं आता, हर एक डेटा पॉइंट्स के इन अकॉर्डेंस मार्केट मे नॉट मूव. दैट इज व्हाट वी कॉल अ रिस्पॉन्स लैग टाइम आरिफ. आप सोच रहे हो पीसीआर हाई ये है, हो सकता है 2 दिन बाद उसका इफेक्ट आए, बट अभी जो मोमेंटम चल रहा है ग्लोबल के साथ, सब जगह ग्रीन है, तो वो एक फॉलो अप आ जाएगा आरिफ. आफ्टर दिस लेट्स गो टू गिव दिस थिंग बैंक निफ्टी. देखिए बैंक निफ्टी बहुत क्रूशियल स्टेज पे, इस पे एक्सपोनेंशियल नहीं, सीधा सीधा 200 डे सिंपल है जो कि कल का हाई है. और देखिए बैंक निफ्टी हैज गॉन इनटू दिस कंसोलिडेशन, राइट. अभी ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पे इट कैन टेक बैंक निफ्टी ऑल द वे टू हियर, बट दैट्स अ स्विंग सेटअप. लेट डिस्कस द डे ट्रेड्स. व्हाट्स रेलेवेंट फॉर द डे. अगर मैं यहाँ पे 200 दिन का एवरेज डाल देता हूँ बैंक निफ्टी में, दिस इज सिंपल. व्हाई? बिकॉज इट इज येट नॉट क्रॉस, तो ये हाई है. यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉप कर दो भाई, और ये कल का फ्राइडे का लो है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप करो तो आपको एक रेंज मिलेगी. और जनरली अ वॉइस मार्केट ट्राइज टू ब्रेक वन साइड ऑफ द रेंज. उसके बाद में 60 मिनट्स पे जा रहा हूँ. देखिए अगर ये 200 डे में ये हाई है, इफ इट क्रॉसेस दिस देन देयर शुड बी अ डिसेंट रन इन बैंक निफ्टी. और फिर से बैंक निफ्टी में भी क्या एक चैनल बन रहा अभी. देखिए 2 लोज कनेक्ट हो रहे और ये हाइस कनेक्ट हो रहा. ऊपर में अभी टच पॉइंट्स नहीं है, तो मैं एक चैनल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन बना के छोड़ देंगे हम लोग, विच इज अ राइजिंग ट्रेंड लाइन विच सेज दिस इज द सपोर्ट लेवल. So bank nifty till it's not breaking this trend line support, it's positive, right? और ये 200 डीए में है, 57,400. देखते 200 डीए पे कैसे बिहेव करता. देखिए ऐसा मार्केट हम सब पॉजिटिव है, गैप अप हो रहा बहुत बार के, गैप अप होने के बाद हमें मार्केट एक फॉक्स कर देता. नानावती से टुडेज एक्सपेक्टेड गैप अप में वॉयलेट, या आज लग रहा है इट में गैप अप अबव द 200 डीए में ओनली. तो मार्केट इज क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट एवरेजेस. इसमें क्या होता है, डे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो वॉलेटिलिटी आती है, गैप अप आती है, जो मूवमेंट आते हैं, एट टाइम्स इट्स टू मच फॉर अस टू बियर. तो गो स्लो, टेक अ डीप ब्रेथ, 15 मिनट वेट करो, सी हाउ द गैप इज, क्या प्राइस विल फेड इन द गैप और प्राइस विल गिव द ब्रेकआउट्स. फाइन. सो आपको आज 2 चीज करनी है. फर्स्ट, मार्क योर ओपनिंग रेंज, और second,
वीवैप पे ध्यान दो, राइट। और थर्ड, जो गैप अप हो रहा है उसको हम क्या गैप अप, पोस्ट द गैप अप, सी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर गैप अप ऐसे होता है ना, मार्केट इज गैपिंग अप, लेट्स से 15 मिनट का 5 मिनट का भी लेट्स से रेंज बन गया, एंड द मूवमेंट्स आर वेरी इमीडिएट, ओके। आइदर इट गैप्स अप एंड गिव्स अ स्मॉल लिटिल, देखिए बहुत बड़ा अगर इसके साथ मार्केट गैप अप हुआ है, then it gives a small little spike in the morning, or after a gap up it tries to fade in the gap। तो ये बोलना बहुत टफ हो जाता है एज अ ट्रेडर कि फर्स्ट कौन सा मूव आएगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? So as a trader it becomes too tough for us to say whether this is the opening range। मैं लिख देता हूँ ORB। Remember this picture today। I think Atul is not there today। आफ्टर ORB 5 या 15 मिनट तक वेट करो, एक इमीडिएट स्पाइक आता है, जैसे यहाँ पे देखिए, दिस पार्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, फाइन। मार्केट ओपन, फिर एक इमीडिएट स्पाइक आ गया, हियर मार्केट ओपन, स्पाइक नहीं आया, इट फेडेड इन द गैप। या आई वुड से आरिफ, अगर टुडे इफ यू आर अग्रेसिव, द OR फॉर मॉर्निंग ट्रेड्स, झटपट ट्रेड्स विल बी 5 minutes or 15 minutes। Got it? Everybody clear? Based on what's your level of aggression। जल्दी ऐसा मार्केट मैंने देखा है क्या, खुल के वीवैप का एक सपोर्ट लेके एक 5 मिनट के बाद एक ऊपर ब्रेक दे देता है, विच इज इन निफ्टी में अगर 30 से 50 पॉइंट का मूव रहता है, बैंक निफ्टी में करीब करीब 70 से 100 पॉइंट का मूव रहता है। गॉट इट? सो टुडे लुक फॉर दिस पिक्चर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। लुक फॉर दिस पिक्चर टुडे, which could be 5 minutes or 15 minutes। Everybody clear about this? Give me either a yes or a no. Yes। And the second thing which you have to watch is the daily ATR lines। मैं एक बार, yeah, I'm extending the session, it's fine। But देखिए मार्केट अगर जोर से खुलता है ना, वो जो डेली ATR लाइन्स है वो यहाँ पे आप जाओ, यू हैव टू टाइप डेली ATR लाइन्स, द नंबर इज 244 इट बाय इन्वेस्टोरी। तो ये कुछ नहीं है, ATR को प्लस और माइनस करके प्लॉट करता है। देखिए बहुत बार गैप अप होता है ना, तो इट स्ट्रेट गैप्स अप अराउंड द अपर हाई ऑन लोकेशन ATR, और वहां पे स्टक हो जाता है मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट? अगर सॉफ्ट खुलता है तेजी में, इट ट्राइज टू टच द ATR। एवरीबडी क्लियर? अभी आप ATR लाइन प्लॉट करोगे तो कल के बेस पे है। So what you have to do is IB Mathematics, go to the trading titans on Substack. 2 notes I have written with recording on location and how to use it. Fine. Make sure you go through it. That's why in tips and tricks section you have to follow. This is by Trading Titan Incred Money. I have written 2 detailed articles along with the recordings. So this is the this week's Substack, which I have covered all the sectorial indices, and I have covered 2 stocks also. One stock, this is this one, part 1 and part 2 will be there. Okay. So in stocks I have covered HBL, engineering, ध्यान रखो इस पे, गैप फिल हो गया और it's trying to inch higher। And second is the Reliance, it has closed above 20, can reach the upper end of the range। Rest, if you want to read all the international indices or global indices, and plus all the sector indices which I have covered in great details over here। So make sure you spend some time before market opens and read the weekly Substack note। Yes, Arif, आपके दिमाग में चल रहा आरिफ समथिंग विच इज अगेंस्ट द मार्केट? रुक जाओ आरिफ, पहले 15 मिनट आरिफ, फर्स्ट 15 मिनट्स पॉज योर ट्रेड आरिफ, फिर से ध्यान दो कि ब्रेकआउट आ रहा है कि आपको एक स्मॉल ट्रेड लेके निकलना है, बिकॉज बड़े गैप में डे ट्रेडर्स के लिए सारे ट्रेड्स खत्म हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू गो थ्रू द सबस्टैक नोट विच आई हैव पुट इट इन द दिस थिंग। Let me once again put it. Here it goes, right? And most of you are wondering what I'm talking about. It's a tips and tricks। In tips and tricks, मैंने जो अनसर्टनिटी वाला लिखा है, कंजेशन
What IB mathematics you are referring to is this part. A simple guide to day trading zone part 1 and part 2. Make sure you read both this. That's where I've detailed about the daily ATR lines and how to mark the location. So these two becomes your reads today. And that's how markets are. I'm going to Bank Nifty. Remember this picture which I had marked for you. Either of the two will unfold और आप decide करो आपको कैसे trade करना. और भी 5 और 15 मिनट का आज important रहेगा. Fine. If you want quicken in and out with a VWAP as a trade as a stop, देखो आपको एक burst मिल रहा है कि नहीं, which is not too big. High market is opening high on location if it's gapping up, no doubt about it. Fine. देखिए location is very important friends. आप सब ignore करते हो location को. Fine. Location का मतलब क्या है? Location आपको क्यों जानना है? Why should you need low location? Because see, you are right on the direction. बहुत बार क्या होता है, आप राइट हो डायरेक्शन में कि ऊपर में ये भाव आएगा लॉन्ग किया है तो नीचे में ये भाव आएगा शॉर्ट किया, तो फिर होता क्या, पहले आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता फिर टारगेट आता, देन इट मेक्स नो सेंस. दिस हैपेंस बिकॉज यू आर इग्नोरिंग द लोकेशन पार्ट ऑफ डे ट्रेडिंग. So that's where in the tips and tricks part 1 and part 2, I have detailed about location. Please go through it. You yourself will see what big difference it makes in your trading. आपको ही लगेगा कितना बड़ा difference आपके trading में आ रहा है. Arif and all the participants, make sure you go through it. Fine. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day. We'll again meet in the evening at 3:45.